Hi, good evening, friends. Good evening, dear all. I welcome you all to Arifin, and I hope my voice is clearly audible. My voice, Subuji Pilamane. I hope it is clearly audible. So let's start. Let's start with the discussion. So we will be talking about two things. We'll be talking about two things. Current affairs April 2nd and 3rd week. ए दीटा जाको week को हमें round up करिबा. All right, so let's quickly start with the first part, that is April, the second week. All right, see the question number 1. As per the Asian Development Bank outlook, what is the estimated growth rate of India as per 2022, 23, 24? Right, again a question कौन पचारुची ना Asian Developmental Outlook India रो GDP को केते रेट रे केते किरे प्रोजेक्ट करिची. This answer is 8%. Correct. So this basically is projected by Asian Development Bank. तारो गोटे रिपोर्ट अछि Asian Development Outlook जोतरे से प्रोजेक्ट करछि 8% रो. राइट, बहुत थर पिला मान के एमती डाउट हो जे हमें एई एस्पेक्ट रो कोन सब मन रखिबु. You should at least see it in two ways. गोटे हला आइदर अपन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मानकर रेटिंग्स भरिका देखंतु नहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मानकर रेटिंग्स देखंतु. नेशनल इन द सेंस कोन हे परिबो ना वर्ल्ड बैंक, IMF एंड एटी जेमते लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, नहले न्यू डेवलपमेंट बैंक, नहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ए परिबो, नहले गोटे फिच अछि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एमानकर कोनोसी भी रेटिंग्स गुडा को मिस करिवेनी. राइट, these are basically international organizations. These are international organizations. National organizations रे कोन हे परिबो ना आपण आगे फाइनेंस मिनिस्टर डेटा को देखिबे. ता सहित we have another one, Reserve Bank of India. Correct. तापरे SEBI अछि. Then we have another organization जहा को हम कहउचंती we have NASSCOM गोटे अछि. NASSCOM रो प्रोजेक्शन आपण टिके देखिबे. Correct. So these become important in the examination. तने को ऑर्गेनाइजेशन को केति की परसेंट रो जीडीपी प्रोजेक्शन करछि ताकू भूलिबे नाही. This is another important question. All right, next one. You see, what is the theme of the World Health Day 2022? World Health Day रो इथरकर थीम कोन थिला ना our planet our health. Again this is another type of question जोटा अपन को एग्जाम रे अपन आराम से you can predict it. So our health, our planet our health, this was the theme of the World Health Day. मु बारंबार कहिछि जेतबेले भी अपन पढिबे सेतबेले important days आ तार थीम ऊपर टिके फोकस करथि. Okay, now which institution released the Braving the Storms East Asia and Pacific Economic Update report? A report किए publish कर सकते recently. It has been published by World Bank. Correct, it has been published by World Bank. So report ना कौन थिला Braving the Storms East Asia and Pacific Economic Update report. Right, so this is about the World Bank. Next you see, now which milestone has been achieved by India's agricultural products export in 2021-22? तमने टिके नोटिस करंतु जेतबेले कोविड रो लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हला से समय रु एबे पर्यंत रो इंडिया रे जेतेरा सेक्टर्स काम करचंती. करेक्ट, वी हैव द प्राइमरी सेक्टर एट द बॉटम, तापरे आसुची कोन सेकेंडरी सेक्टर जहा को इंडस्ट्रियल सेक्टर करचंती, तापरे आसुची टर्शियरी सेक्टर. करेक्ट. सो हमें जदी कोविड समय रो एनालिसिस देखिबा ताले सेकेंडरी सेक्टर तो कंप्लीटली कोन हेगला नेगेटिव को पड़ेला. So was the situation with the tertiary sector, ये भी नेगेटिव पड़ितला. राइट, इंडियन इंडिपेंडेंस परटू प्रथम थरो करी की गोटे इंडिया गोटे मिराकल हैला. प्राइमरी सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक आइगला. जोठी अन्य सेक्टर्स माने नेगेटिव रे ग्रो करिया स्टार्ट करले सेठी प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉजिटिव से रहतला सेतबेले आउ तारो एक्सपेक्टेशन टू अधिका ग्रो करछि से. करेक्ट, सेति पय हमें ए क्वेश्चन को देखुछन. दिस बिकम्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. से कोन कहूची एग्रीकल्चरल सेक्टर रिसेंटली को माइलस्टोन अचीव करछि. नाउ $50 बिलियन रो एक्सपोर्ट रो गोटे माइलस्टोन अचीव करछि. ये छोटो कथा न फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. दिस इज अ बिग माइलस्टोन. ऑलराइट, next, the One Health framework has been launched as a pilot project in which state? The One Health framework eta kiye launch kala recently? It was launched by Uttarakhand. This was launched by Uttarakhand. Yes, again Uttarakhand related जेतबेले मु स्टेट्स मानक विषय कुहे सेतबेले मन रखथांतु कोन कोन कहूची सब. सपोज उत्तराखंड रो पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखिबे. उत्तराखंड रो
economic aspect देखिबे, then political, then गला कौन historical aspect, and ultimately Uttarakhand रा geographical aspect, right? So if you are analyzing this state, then analyze it in 4 different ways at least. Okay, geographical aspect कौन हे परिबो ना तारो neighboring states सुरा सब के अछंती, को नदी जाउची, कोन किछि डैम सेठी अछि की, right? These are all. अच्छा, को प्रकार soil सेठी exist करूची. Political aspect रे उत्तराखंड रो capital सुरा कोन CM, governor, everything. All right, economic aspect ru उत्तराखंड रो economy का ऊपर dependent, whether it is tourism, whether it is the agricultural products, whether it is activities like industries. अच्छा, history उत्तराखंड रो history कोन कहूची, उत्तराखंड आगरु the year 2000 पूर्वरु कोथरे मिसी की थिला ना उत्तर प्रदेश सहित मिसी की थिला, correct? So these are all small aspects that you have to take care of. Okay, उत्तराखंड एटू सीधा क्वेश्चन आउची गवर्नर और सीएम. So at least know who are the governor and the CMs. Next one, who is the chairperson of advisory committee to guide the semiconductor mission? I hope you must be knowing it कि recently semiconductors मानकर बहुत बड़ा scarcity create हेतला, आ ताकू बूस्ट करिया पई, सही सेक्टर को बूस्ट करिया पई कोन करा जायछि ना ए प्रकार गवर्नमेंट कोन करछि स्टेप नोछि, करेक्ट? सो who is the chairperson of this committee? It is Ashwini Vaishnav, right? Ministry of Electronics and Information Technology रो जे मिनिस्टर रे अछंती अश्विनी वैष्णव, he is basically the chairperson of this committee, correct? Semiconductor, right? Do you know the meaning of a semiconductor? My question is very simple. Pila mane, what is the meaning of a semiconductor? When I say conductor, non-conductor and semiconductor, एवढा मान्य कोन ठीक है, चेक करिए. Next, which is the first state or UT which has to include e-cycles in its electric vehicle policy? Which is this state? It is basically New Delhi, right? Next, Exoplanet K2 2016 BLG 0005LB. What a बहुत बड़ा code word, correct? So which has been recently found is near identical twin of which planet? It is basically Jupiter. जुपिटर भलिया देखिया को से गोटे प्लैनेट डिस्कवर कराई छी एक्सोप्लैनेट. पिला माने गोटे जिंस नोटिस करंतु, व्हेन आई से एक्सोप्लैनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोप्लैनेट? करेक्ट, वी हैव अ सोलर सिस्टम, एट द सेंटर वी हैव द सन, करेक्ट? वी हैव द सन एट द सेंटर, तापरे अलग अलग प्लैनेट्स गुडा अछन सब, करेक्ट? सो इफ this is the solar system, this is the periphery of solar system, this is the margin of the solar system. सोलर सिस्टम रो भितरे जो माने रहउचंदी समान को हमें मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली कहउचंदी, किंतु जो माने बाहरे रहउचंदी, राइट? एनी प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज व्हिच आर एक्जिस्टिंग आउटसाइड द सोलर सिस्टम, दे आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट्स. दैट मींस एनी प्लैनेट व्हिच इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम, करेक्ट? अच्छा, so those are called exoplanets, right? So when I say exoplanet K2 2016 and so, what is this all about? This actually looks like Jupiter, but it is outside our solar system, because our solar system रा सबुठु बड़ planet जदि देखिबी सेटा होची Jupiter भलिया आउ कोनसी planet नाही, करेक्ट? धान माने जदि हे परिबो ताले हम solar system बाहर थिबो, करेक्ट? So this one is looking like Jupiter, correct? So talking about Satyavrata is saying semiconductors largest producer is Taiwan right now. I just check it once more, correct? Acha, etu gote question hochi which is called Earth's twin. Earth's twin planet kaha ko कहउचंती? ए जो सब information मु आपन को दउची, this is very crucial for your ASO exam, all right, and other exams as well. As per the recently study of CEEW, which state has the highest number of forest fire incidences in the last 2 decades? पिला माने ए जो इश्यू एबे मु डिस्कस करूची, the forest fires, एबे आगो को एटा आपण बहुत exaggerated form रे आपण देखिबे, कारण कि we are entering into the month of summer, all right? The summer season is going to set in, so forest fire would be very common, right? In Odisha, in different parts of India, and especially कोठी ना ऑस्ट्रेलिया रे last time फॉरेस्ट फायर बहुत अधिक हैरान करथले, करेक्ट? सो ए फॉरेस्ट फायर इश्यू को भलस देखिबे, फॉरेस्ट फायर ता कोन, रीजन कोन, काहे की फॉरेस्ट फायर होची, एटा मैन मेड कि नेचुरल, करेक्ट? सी ऑल द एंगल्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ऑलराइट? व्हाट इज द, आई होप आई गिव द आंसर. दिस आंसर इज मिजोरम.
correct. Which state is the highest number of forest fire? It was Mizoram, correct, a northeastern state. Next one, what is the repo rate after monetary policy committee meeting held in April 2022? This is another important question. जो माने आगो को बैंकिंग एग्जाम रे बसिबा को जाउछन्ती तांको पय एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. रेपो रेट केति की रहिबो? इट इज 4%. This is 4%, correct. Earlier it was 3.35%. So this monetary policy committee has decided to increase the repo rate to 4%. करेक्ट. अच्छा, क्लास रे जतबे इकोनॉमिक्स डिस्कस करथली मन पकांतु टिके जो माने मो पुना स्टूडेंट सेमान को कहिची जे आरबीआई गवर्नर एबे डिसाइड करले जे रेपो रेट आगरु थिला 3.35%. एबे आरबीआई गवर्नर डिसाइड करले याकू बढ़े की 4% एग्जैक्टली करिया पे. व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन? जिनसर दरदाम गुडा कि इन्फ्लेशन एथरे कंट्रोल होबो कि इन्फ्लेशन आउरी बढ़ी जिवो, राइट? जस्ट चेक एंड टेल मी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the real gross domestic product growth projection for 2022-23 by RBI's monetary policy committee? Correct. So एठी क्वेश्चन कोन पचाउछि देखन, ठीक फोकस करिवे. से जीडीपी पचारनी, से पचाउछि रियल जीडीपी. करेक्ट. So if you see, there are two types of GDPs, correct? One is a nominal GDP, one is a real GDP. One is a real GDP, correct? Nominal GDP is calculated at the current prices. These are calculated at current prices. Again, classroom data koichi. Real GDP is calculated somewhere at the base prices, correct? And nominal GDP is not real in nature, correct? इतने बहुत प्रकार रो impurities you can say, or you can say some exaggerated information इतने थाए. This is not real at all. Okay, real कोटा ना, real GDP is real. जोटा को base year price से तो compare करके हमें बाहर पूछते, correct? GDP पढ़ेला बेले टा clearly बुझेइछि. Okay, so monetary policy committee हिसाब रे इंडिया रो real GDP केते परसेंट रहिबो? It would be 7.2%. It would be around 7.2%. Okay. Next question. Which is the nodal agency to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? It is National Health Authority. Correct. Again, an important question. Correct. जो जिनसोटा पढ़े पढ़े आसीछि क्लासरूम रे, this is the right time to revise them, to link them with current affairs. Okay, so that exam रे सब प्रकार क्वेश्चन हमें हैंडल कर पारी. Next, which institution recently launched अवसर scheme? किए लॉन्च कला एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अवसर स्कीम रा कोन यार फुल फॉर्म देखन ठीक है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अवसर? एयरपोर्ट as venue for skilled artisans of the region. Airport as venue for skilled artisans of the region, correct? It aims to allocate space to self-help groups at its airports for selling or showcasing their self-made products. Simple answer. जो माने सब जहाँ को हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चंती, जो माने सब आर्टिसंस अछंती, से माने निजर आर्टिकल्स घरिका निज कलाकृति गुडा को से माने पाखा पाखी एयरपोर्ट रे कोठी डिस्प्ले करि परिबे एंड सेटा को सेल करि परिबे. ता पई तयारी कराई छि अवसर. सो अवसर इज एसोसिएटेड विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ the animation, visual effects, gaming and comic promotion task force? Friends, मन पकांतु किछिटा क्लास पूर्वरु आपन को या विषय रे मु डिस्कस करै छि ऑलरेडी यार फुल फॉर्म. ओके, सो एबे क्वेश्चन पचाउ छि एटा ए जो यार टास्क फोर्स रो माने नोडल एजेंसी की. इट इज बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नाउ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द फर्स्ट fully private astronaut mission to the international space station? एटा किए ही थिबो, इमेजिन करंतु. ए प्रकार काम जदि गवर्नमेंट न करी कि प्राइवेट करे ताले करी के परिबो? SpaceX, Elon Musk, right? And this person was in news recently. देखिए नेक्स्ट वन. The Pradhan Mantri Sangrahalaya Museum is located in which city? माने यार नाटा को चेंज करा दिछि, correct? So this is located in New Delhi. It's just an old wine in a new bottle. Okay, so Pradhan Mantri Sangrahalaya Museum जेते सब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स अछंती से मानकर एतरे माने कंट्रीब्यूशंस उडा को पोर्ट्रे कराई छि. ऑलराइट, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सी
All right. Next one. Which union ministry implements the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan? This is implemented by Ministry of Panchayati Raj. Correct? Ministry of Panchayati Raj. Next one. Who has been awarded the International Gandhi Award for Leprosy 2021? Who is the winner of it? This is Dr. Bhushan Kumar. Dr. Bhushan Kumar is the winner of this International Gandhi Award for Leprosy 2021. So leprosy ta ki prakar disease? Which kind of a disease? Which kind of a disease leprosy is? Whether it is a fungal disease, viral disease, bacterial disease, or anything else. Okay, take a check. Now, which Indian state announced to celebrate the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar as Equality Day? That falls on 14th of April. Correct? So, April 14 को Equality Day बोली किए celebrate करेगा Tamil Nadu. Correct? So, Tamil Nadu CM M.K. Stalin announced in the Legislative Assembly that the birth anniversary of Ambedkar will be celebrated as Equality Day. Chief Minister said that a pledge would also be taken across the state on the day. Government also planned to translate and publish some selected books of Ambedkar in Tamil. Correct? So, Ambedkar को किसी बही गुड़ा तमिल भाषा रे भी कौन करा जीवन translate करके बिक्री करा जीवो. Correct? So, this is Equality Day. Now, as per the World Bank's April update, what is India's GDP forecast for fiscal 2020-23? Again, very important question. Recently, World Bank India GDP को कितने percent रे project करची? 8% रे project करची basically. Correct. And remember, this is not talking about real GDP or nominal GDP. Correct. Next, Moskva. Moskva, which was seen in news recently, is a famous warship of which country? This is of course basically Russia. But a बहुत बड़ा धरणर माने गोटे change है गला war situation रे. The warship of Russia was targeted by the Ukrainian Navy. So the 510 crew missile cruiser Moskva, which was a symbol of Russia's military power, is set to hit by Ukrainian missiles. तामाने खाली Russia attack करुचे एंती नुहा, Ukraine भी सेपटू retaliate करुची. As per the Russian military sources, the warship which was leading its naval assault on Ukraine was damaged by an explosion and sank after a fire. तामाने जतबले से war रे engage थिला सेतबले Ukraine आडू गोटे missile आसी की बाजिला and ultimately से कोनला धीरे-धीरे explosion हेगी धीरे-धीरे बुड़ी गला सेटा. All right. So this is the Russian warship. Okay. Next, when is the Himachal Divas celebrated? Himachal Divas कुछ कहते हैं celebrate करा जाऊँगी. It is basically on April 15. Correct. So if Himachal Pradesh is in news right now, then again Himachal को सही chapter angle खोज देवे. Right. Suppose मैं आपको पचारी which is the largest producer of apple. Number 1. Correct. Next, गोटे जगह गोटे जिनस होची mushroom. Mushroom रा सबुठु बड़ो producer किए. This is question number 2. Alright, Himachal Pradesh रा capitals उड़ा सबु कौन-कौन? Which are all the capitals of Himachal Pradesh? Okay, अच्छा आउ कौन question एक परिबो Himachal Pradesh रा CM कहिबे and governor कहिबे. Right, so these are all questions for you. Next, so this is April 15. Now, what is the expansion of LPA based on which Indian Meteorological Department forecast monsoon? ताले monsoon को जो basis रे Indian Meteorological Department predict करूची, ताकू basically LPA कहउचंदी से model रो full form होची कोन long period average. तामाने पाखापाखी 5 वर्षर गोटे average को नै की monsoon को predict करा जाउची by the Indian Meteorological Department. Correct. So can I ask you one thing? Who is called the cyclone man? Who is called the cyclone man of India? ठीक है, check करिए पहले मतलब पिला माने. Who is called the cyclone man of India? Next question. Now, Neptune missile system, which was seen in news recently, is associated with which country? This is associated with Ukraine. Correct. So you can see this is an anti-ship cruise missile, high explosive fragmentation, 870 kg. यार range होची 170 mile की 280 kilometers. Correct. So Moskva is from this is from Russia. All right. Next, under the production-linked incentive scheme, the center provides financial support for manufacturing how many years?
करेक्ट ताले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अंडर रे गवर्नमेंट गोटे कंपनी को केते वर्ष पर्यंत सपोर्ट करिवो इट इज बेसिकली फॉर 5 years. Now which is the first step to develop migration tracking system? जेहेतु माइग्रेशन गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम रे कन्वर्ट हे गलानी सो माइग्रेशन रो बहुत ना एस्पेक्ट अछि करेक्ट. Yes, I asked who is the cyclone man of India. It is Dr. Mrityunjay Mahapatra. That is the very right answer. Okay, aw yako mone rakhithibe. He successfully predicted the path of Fani and he became the cyclone man of India just after the cyclone Fani. Okay, next migration गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गलानी राइट. सो बेसिकली माइग्रेशन कोटू कोठी के होची ना रूरल रु अर्बन एरिया को माइग्रेशन होची. This is the normal pattern of migration in India. Okay, so से पचार जे कोन which is the first step to develop migration tracking system जो राज्य को सबडू अधिका माइग्रेंट्स जाउथिबे करेक्ट. सो दैट स्टेट इज बेसिकली महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र कोन करजी ना माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करजी कि महाराष्ट्र रे केतेटा माइग्रेंट्स एंटर करजंती करेक्ट. नेक्स्ट export promotion capital goods that is EPCG scheme is associated with the Ministry of Commerce correct. So EPCG itself is a question yaro full form kono right. Ministry of Commerce is associated. Next poison bill which was in news recently is associated with which field? It is associated with acquisition of a company. What is this poison bill? In the field of finance related to merger and acquisition, limited duration shareholder rights plan is also known as poison pill correct. So recently in response to pardon this is not poison bill, this is actually poison pill correct. This is poison pill. Let me write it or rectify it. Poison pill. So what is this poison pill? In the field of merger and acquisition माने जो corporate world अछि corporate world रा कोन हुए गोटे कंपनी मींस गोटे बड़ कंपनी आ गोटे छोटो कंपनी को एक्वायर करबार चक्कर रे बस्थिन. राइट जेमिति गोटे एग्जांपल दूची गोटे कंपनी अछि ता नाम होची वॉलमार्ट कोन कला निज फाइनेंशियल पावर बेसिस रे कोन कला ना फ्लिपकार्ट को एक्वायर करने. फ्लिपकार्ट an इंडियन कंपनी ताको कोन करची एक्वायर करने छी. अनदर इंपोर्टेंट एग्जांपल अपन देखो तो मेटा जहाँ को अगर हमें फेसबुक नारे जानी चाहिए करेक्ट. मेटा कौन कला कहा को एक्वायर करना ला ना व्हाट्सएप को एक्वायर करना ला. सो एक्विजिशन एंड मर्जर्स आर वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड किंतु याको कोन कहउजंती ना पॉइजन पिल कहउजंती. रिसेंटली इन रिस्पांस टू एलोन मस्क टेकओवर बिड ट्विटर हैज अडॉप्टेड पॉइजन पिल which allows existing shareholder to purchase freshly issued shares in a company at a discount rate to the trading price. This will in turn make buyout plan extremely expensive and complicated correct. तामाने जत्ते बेले गोटे कंपनी सपोज गोटे बड़ कंपनी आ गोटे कंपनी को किनिबा को जाउची टेक ओवर करनबा को जाउची सेते बेले से कोन करे ता शेयर होल्डर्स माने को माने एमितिया गाइडलाइंस इश्यू करे सो दैट माने बड़ कंपनी ए छोटो कंपनी को टेक ओवर न करि पारतु करेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड अ पॉइजन पिल. So this is related to acquisition of a company. Economy side of बहुत important question. Poison pill is associated with what? Okay. Now next question: which state has announced to celebrate the birth anniversary of Siddhalinga Swami and as integration day? Correct. This statement is related to Karnataka. Siddhalinga Swami. Correct. A type of question जदि पढ़े मन रखिबा आंसर टा कर्नाटक आडे कोठी थिबो. Why? Because गोटे कम्युनिटी कर्नाटक रे अछि जहां नाम होछि लिंगायत. देयर इज अ लिंगायत कम्युनिटी करेक्ट. सो याको भलो से नोटिस करिवे याको लेखन होमवर्क हिसाब रे आउ याको सर्च करिवे लिंगायत कम्युनिटी. व्हाट यू नो अबाउट लिंगायत कम्युनिटी. ओके. सो कर्नाटक research designs and standards organization that is RDSO functions under which organization? Whether it is ISRO, DRDO, Indian Railways or Indian Air Force, this answer is Indian Railways correct. So research design and standards organization they are they are in the field of designing locomotive coaches and so on. Next Samia Suluhu Hassan who was in news recently the first female president of which country? So this is a very big achievement actually correct. कौन से देशर प्रेसिडेंट हे जिबाटा एते सहज न इवन से गोटे पोर कंट्री हो ना काहे because of different kinds of
approaches towards women. So aside ru pratham female president Samia Suluhu Hassan hichati se ko desor na Tanzania ro. Correct, she is from Tanzania, right? Can you tell me anyone what is the capital of Tanzania? Tanzania ro capital. Correct. Next question. As per the World Bank, what is the daily expense limit below which a person is classified to be extremely poor, to be in extreme poverty? Correct. Recently got a class re hame discuss करथले कोन हमें डिस्कस करथले poverty chapter. Correct. SSC रो कोन से got class रे हमें poverty विषय रे discuss करथले, right? So से chapter कोन discuss करथले poverty रो अलग अलग types बुझैथले. Correct. गोटे थिला कोन ना गोटे थिला relative poverty, गोटे term थिला relative poverty ଆଉ गोटे थिला abject poverty, if you remember. गोटे थिला abject poverty. Correct. So if it is abject poverty, that means it is the extreme form of poverty. Now गोटे लोक food, basic necessities, food, clothing और shelter, এই তিনটা জিনিস भी अफोर्ड करि पारुनी, ताहले हमें कहबा the person is in abject poverty. Correct. So extreme poverty केतेबेले according to World Bank गोटे लोक extremely poor केतेबेले कहै जिवो जेतेबेले तार daily expenses $1.9 to be कम. That means से सेतिकी ता पाखरे purchasing power नाही बोली से हो जे कोन ना he is in a abject poverty basically. Correct. अच्छा, coming back to the previous question, who is the what is the capital of Tanzania? It is Dodoma. This is correct, right? Arjun, thank you for the answer. Right. So this is the most important question. You have to take a mind rakhibe the daily expenses are $1.90 hele gote loko kon rochi na abject poverty ro. Right, hold on just a second. Yes, pardon friends. So this is another important question. Next one, which union ministry organizes block level health melas at more than 1 lakh Ayushman Bharat health and awareness, health and wellness centers? Correct. So it is clear launch recently. It is actually coordinated by Ministry of Health. It is coordinated by Ministry of Health. Correct. The block level health melas, right? जदि ओडिसा रो गां गंडा धरिका आपण रिसेंटली विजिट करिथिबे ताले देखिथिबे ए हेल्थ मेलास धरिका एबे चाली छि रिसेंटली. Okay, so observe करिवे जिंस ओके. These are all things which are related to our life. माने याकू खाली घोसी की आपण केबे भी मन रख परिबे. If you are not able to observe your periphery, your surrounding, your environment, then most of the GK question आपण definitely भूल करिवे. जेमिति कि गोटे एग्जांपल पिला मान को बारंबार दिए ओडिसा गवर्नमेंट गोटे स्कीम लॉन्च कला वसुधा. आपण माने समस्त रास्ता रे गला बेले गां गंडा रे बुलिला बेले गोटे एमितिया देखिथिबे गोटे टैप थिबो. टैप रे एमिति कोन होथिबो ना पानी पडुथो, राइट? एमिति करी के गोटे पानी पडुथो. आ ओडिया रे एठी गोटे लेखाइथिबो वसुधा लेखाइथिबो देखि, राइट? एटा हम समस्त देखि छ. करेक्ट. जो माने देखि के ऑब्जर्व करना है ना से माने एक क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली भूल करिवे, राइट? सो प्लीज ट्राई टू develop that temperament of observing different things around you. Okay, that will give you mileage in the exam. Which country is the host of International Water Week, Water Convention 2022? Right, this answer is basically Singapore. Correct. A related पिला माने water related मु बारंबार गोटे क्वेश्चन आपन को कुबे माइंड रे भी रखि थिबे. एग्जाम रे ए क्वेश्चन पढुची कोन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल केतेटा ना 17 टा अछि.
There are total 17 sustainable development goals. My question is that water comes under which number goal? Water comes under goal number what? A very expensive question again, I say. Right? This is an expensive question. You cannot afford to miss it. Okay, Singapore. Now, Praveen Jugnauth, who was in news recently, is the Prime Minister of which country? He is from Mauritius. Praveen Jugnauth. Okay. Mauritius capital. What is the capital of Mauritius? Check it and tell me. East Timor, which was in news, was recognized by United Nations in which year? East Timor को गोटे देश हिसाब रे केबे गोटे मान्यता मिलला? This was in 2002. Okay, and you see where is East Timor? Indonesia रो ईस्टर्न साइड रे देखो तो नहले ऑस्ट्रेलिया रो नॉर्दर्न साइड रे ईस्ट तिमोर अपन को मिल जाय. करेक्ट. सो दिस इज ईस्ट तिमोर. माने जदी एटा गोटे कंट्री होय ताले यार कैपिटल कोन मोदी राइज से पचारली. करेक्ट. मो पचारली कोन? नाउ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस एंड नंबर 2 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर? फटाफट मत रे बहुत जल्दी. अल अक्सा मस्जिद. अल अक्सा मस्जिद जदी पिला माने मो क्लास केयरफुली करिथिबे ताले बिगिनिंग रु ए क्वेश्चन मु आपन कहि आछि. अल अक्सा मस्जिद और अल अक्सा मॉस्क. यह भी कहि आपन को गोटे जगह अछि जेरूसलम. करेक्ट. जेरूसलम इज द बर्थ प्लेस ऑफ 3 रिलीजन्स. हां. सो मु पचारथली कोन यस मॉरिशस र कैपिटल हे गेला पोर्ट लुइस. सेकंड आसला ईस्ट तिमोर. ईस्ट तिमोर र कैपिटल. अच्छा. जेरूसलम इज द बर्थ प्लेस ऑफ 3 रिलीजन्स. गोटे हला जीव रू दीटा रिलीजन बाहर ले. गोटे हला क्रिश्चियनिटी एंड सेकंड रिलीजन इज बेसिकली इस्लाम. Second religion is basically Islam. Correct. So you should know this is the birthplace of 3 religions, which we call Jerusalem. Correct. So this place is exactly located in Jerusalem. Jodi etiki logic ठीक अछि ताहले यार आंसर ता डेफिनेटली ठीक ही होबो. केबे भूल होबनी आई टेल यू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Who is the first officer from Corps of Engineers to become Chief of Army Staff? It is Lieutenant General Manoj Pandey. Lieutenant General Manoj Pandey. Okay, mo pacharli East Timor capital is it Dili? DILI. Arjun, am I reading the same thing? Dili. East Timor capital Dili. Okay, Magar which was in news recently is the name of which species? We all know it. Magar kon basically it's basically a crocodile. Correct. Eta bula ban ke. Now, where is the WHO Global Center for Traditional Medicine located in India? It is located in Jamnagar. Take one thing, Jamnagar ro gote important search kale. What is so important about this Jamnagar except this question? Okay, GCTM to Jamnagar ro achi, that is true. Kintu ya chhada bhi Jamnagar ro au gote significance achi. ठीक है, check kale bila mane. And that to oil side. Oil angle ru Jamnagar kon important. Okay. Achha. What is the food grain production target announced for the next financial year? It is 328 million tons. Correct. Ethi gote jinso janantu. Jetala mu crop hoje na focus kari suniya mo katha. Cropping ro tinta season achi. Correct. Prathama season ko kohuchanti kharif season. Tapare asuchi kon na rabi season. Tapare asuchi zayed season. Zayed season. Correct. So it tinta jaka season bisare got a basic idea rakhithi. All right, exam re eta hi help karibo. National Apprenticeship Mela has been organized under which mission? This has been under Skill India program. This has been under Skill India program. All right. Next, which state launched its space tech framework and hosted the launch event of Metaverse? Eta ke launch kala basically Telangana. Telangana re gote high tech city achi jaha ko ame Hyderabad kohujandi. Correct. That you should know. Which Indian armed force organizes the national level pollution response exercise, that is NATPOL Rex? It launched recently Indian Coast Guard, ICJ. Yes, Jamnagar is famous for what? Jamnagar is famous for refinery. Correct. Very important question. Yes, and thanks for the answer, Arjun. So Indian Coast Guard actually launched NATPOL Rex. Okay. Next one is which union ministry hosted National Metallurgist Award 2021? It recently launched Ministry of Steel. This was basically Ministry
of a steel. You can see it, Ministry of Steel. Which company delivered Scorpion class submarine INS Wagshir to Indian Navy? It is basically Mazagon Dock. Again, a very important question. Classroom रे एटा कहिथिली भी एटा classroom रे कहिथिली भी जे हम इंडिया रे टोटल केतेटा मेजर एयर सी पोर्ट्स अछंती से भितरु कोठी कोठी यू नो शिप्स घरिका तयारी होची और कोठी कोठी शिप घरिका ब्रेकिंग करा जाउची. ऑलराइट, सो एगुडा को टिके माइंड रे रखुथिबो. नेक्स्ट यू सी, now which city has hosted the Global Ayush Investment and Innovation Summit? This was basically Gandhinagar. Correct. So Gandhinagar ro gote uniqueness mata कहले search करिके. What is so unique about Gandhinagar? What is so special about Gandhinagar? Gandhinagar ro speciality kon? What is this search करी kon? Okay. Last few questions. Okay, then we will find out. India's first pure green hydrogen plant has been commissioned in the state of Assam. Correct. Last class रे SSC 6 की 7 रे एटा गोटे homework देथिली green hydrogen कोन पिला. Correct. You also take it as a homework. What is this green hydrogen and why it is been talked so much of right now? Okay. Why it is in news recently? Green hydrogen. After Bhutan and Singapore, NPCI has extended its services to which country? It is basically UAE. Correct. If you can, then please go to NPCI Wikipedia. यदि आपको लागू जेटा इंपोर्टेंट ताले NPCI Wikipedia को जिबे, then ultimately आपको सर्च करंतु the other important details about NPCI. NPCI has a different products. What is NPCI? तारो full form कोन, तारो products गुरा सब कोन ता माने कोन सब ओटा क्लास रे सर्च भी करैछि, है ना. Next one, the Ariosoma indicum, which was in news recently, belongs to which species? It is basically a variety of eel. It's basically a variety of eel. एमिति recent past रे आपण बहुत गुड प्रकार रो eel माछ देखिथिबे. हां, so मु पचरतली कोन गांधीनगर. It is the greenest capital of Asia. Yes, Arjun, that is correct as well. All right. Coming back to the question, eel माछ रो बहुत गुड variety एबे पर्यंत बहुत थोड़ा न्यूज रे रही आछि त ताकू टिके फोकस करिके पढुथिबे. All right, eel माछ कोठी देखा जाय. Right. So with this we have come to the end of this session. माने आज का सेशन रे हमें अप्रैल रो सेकंड और थर्ड वीक डिस्कस करले. करेक्ट. सो नेक्स्ट सेशन रे हमें अप्रैल रो लास्ट वीक डिस्कस करबा एंड देन वी विल अगेन हैव अ राउंड अप. है ना. अच्छा, जो माने सब सेशंस म्हणजे हम ऑनलाइन मींस क्लासरूम सेशन अटेंड करछंती. सो इन द कमिंग वीक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल. करेक्ट. थर्ड वीक ऑफ अप्रैल रो क्विज नो. सो सबसे टिके प्रिपेयर हे रहबे, राइट, बोथ इन भुवनेश्वर एंड इन जाजपुर ब्रांच. All right, so we will meet in those classes. And yes, YouTube re online dekhaba aro week April 4th week. All right, so thank you so much till then. Padu thantu bhal se. Every day your one basic preparation strategy is to go through the newspaper. Correct. barambar kochi paper is the key. jodi paper podu janti tahle सब bale agare रहबे, advantage रहबे. All right, chalo, thank you so much. We will meet